In this lecture, we are going to learn about a cash budget. So let's see the sum from the following information and the assumption that the balance in the hand on 1st Jan is 72,500. Prepare a cash budget. Now cash in hand on a very first day. So what this states, this is a opening balance. And cash budget है तो cash में क्या होता है? What comes in will be your receipt. The money which is going out will be your payment. Okay. Now they have given us the information from the month of Jan से लेके June तक, and they have given us that the cost as well. We have a sales, material, wages, selling and distribution cost, production cost, and administrative cost. So we have a cost which has been given. अब मुझे ये बताओ. See, one thing you have to make sure here that if the money is coming in, it will be written on the receipt side. If the money is going out, it will be written on a payment side. Simple. This is a simple rule which you have to apply in the cash budget. Money coming in, receipt. Money going out, payment. Now, assume that 50% are cash sales. Now, जो भी sales दिया है, उसमें से 50% is what? 50% are the cash sales. तो बाकी का जो remaining 50% है, that will be the credit sale. That is, we will have to receive that money from the debtors. Now tell me, cash sales and the money which will be received from the debtors, where it will be returned? It will be returned on a receipt side or it will be returned on a payment side? Where it will be returned? Obviously, पैसा आ रहा है ना, so it will be returned on a receipt side. Assets are to be acquired in the month of February and April. आप कब assets acquire करने वाले हो? February and April में. So if you are acquiring an asset, that is your expenditure or that is your income? Obviously, you are going to incur the expenses. So where it will be written? अगर आप assets को purchase कर रहे हो, तो which side? Payment side. And payment side maybe you have to just write down. See, here we are going to make the month-wise distribution from Jan से लेके June तक. तो कब हुआ था? February and April में हुआ है. तो you are going to write down the amount only in the two column, February के column में and the April के column में. Therefore, the provision should be made for the payment of 40,000 and 25,000 for the same. So 40,000 will be in the month of February and 25,000 will be in the month of April. An application has been made to the bank for the grant of the loan of 30,000 rupees. क्या application किया है कि we want a loan of 30,000. So here you are going to receive the loan. Receiving the loan means this 30,000 it will be returned in the month of जो भी month दिया होगा. It will be received in the month of May. So May के इसमें column में you are going to write down but under the head receipts because आपको bank loan receive होने वाला है. It is anticipated that a dividend of 35,000 will be paid in the June. 35,000 का आपको dividend pay करना है. Payments it will be coming in under the head payment. Debtors are allowed 1 month of credit. Debtors को क्या बोला? ठीक है, आप 1 month के बाद अपना पैसा देना. तो 1 month का उधारी दिया है इन लोगों को. Sales commission at the rate 2% on the cash sales. See, 50% are only the cash sales. So 2% will be given on that 50%. And 5% on the cash collection from the debtors is to be paid. और जो भी आप डिस्काउंट दोगे, कमीशन दोगे, किसके ऊपर? जो भी कलेक्ट करोगे डेटर से. सो 50% इज अ कैश, सो 50% अनदर 50% इज ऑन अ क्रेडिट. सो उसके ऊपर यू हैव टू पे द 5%. ठीक है, अब दोनों चीज पे करनी है तो इट विल बी रिटर्न ऑन विच साइड? पेमेंट साइड. ठीक है, मतलब अंडर द हेड ऑफ पेमेंट. Creditors for the goods or the overheads grant 1 month of credit. Creditors मतलब हमने जिनसे मटेरियल खरीदा होगा, सप्लायर्स, उनको हम कितने का क्रेडिट, उन्होंने हमें कितने का क्रेडिट दिया है? 1 month का क्रेडिट दिया. सो दिस वी हैव टू टेक के 1 month का उधारी यहाँ पर. एंड जितने भी हमारे ओवरहेड्स बोले, वो सारे ओवरहेड्स की भी इंफॉर्मेशन क्या दिया है? दैट ओवरहेड्स ऑल्सो विल बी गिवन द 1 month का क्रेडिट. तो ये भी आपको जो मतलब जो जैन का होगा दैट विल बी पेड इन द मंथ ऑफ फेब. फेब का जो अमाउंट होगा दैट विल बी पेड इन द मंथ ऑफ मार्च. लाइक दिस यू हैव टू डू द डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ इफ यू सी वेजेस के बारे में यहाँ पर देयर इज नो इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन. सो इफ द इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन, इसका मतलब जो मंथ में वेजेस इनकर्ड हुए वही मंथ में इट हैज बीन हमें पेमेंट भी कर दी है.
ओके, जो मंथ में इनकर्ड हुए वही मंथ में द पेमेंट इज बिन मेड. So from this information, you have to prepare what? You have to prepare a cash budget. Now over here, the working notes are required. First, let's do the format. First, draw the format and then we will see the working notes as well. So heading, you have to give cash budgets from आप जो month से लेके end month तक बना रहे हो उसका नाम लिखोगे. So from here we are preparing from January to Jan. So sorry, June. So cash budget from January to June. Then we have a opening balance which has been given. So here you are going to write down opening. Then receipts. Receipts में हमें सिर्फ 2-3 items थी. So you will be leaving 2-3 lines. Then payments. We have a many of the payments. 1, 2, 3, 4, 5. ये 5 plus 2 commissions. 1 machine purchase and the dividend. So depending upon that, just leave the line. Here there will be a total. C part I have not written because here there will be a total of your assets. That is receipt, sorry. E will be the total of the payments and F will be the closing. How you will be getting the closing? जो भी आपको total receipts मिली, उसमें से total of the payments you will subtract it up, so you will be getting the closing. I'm just writing it down how you will be getting this closing. C done. So after making the format, we are just going to prepare what? We are going to prepare a working note. A working note because हमें 50-50% पर भी ये तो करना है. We cannot directly show here. So we'll prepare the working note. Month number we will be giving it up. Months. सबसे पहले तो हमें opening balance दिया है, तो we will start posting now. Opening balance was how much on 1st Jan? 72,500. So here I will be going it up and I will be writing down 72,500 का opening balance. We're starting with this information. Assume that 50% are your cash sales. So what I will do, I will prepare a working note for the same. So first I will be writing down sales. Number 1, sales. 50%, okay. So पहले ये तो ये देखो sales यहाँ पर कितना है 72,000. 72,000. First you write down whole of the amount. 72,000. Then for the February it is 97,000. For the month of March it is 86,000. For the month of April 88,600. For the month of May 1,02,000. And for the month of June 1,08,700. तो पहले तो मैंने क्या लिखा? I have just written down all the sales first. अब 50 इसके ऊपर 50% is on a credit and 50% will be the cash sales. So here I will be writing down second note. 50%. $36,000. Same way we are going to calculate for every month. So we got for the February 48,500. 43,000 we got it for the month of March. 44,300 for the month of April. 51,250 for the month of May. 4,350 for the month of June. Credit sale 50% will be the cash receipt from debtors, or you can write down credit sale. You do not need to calculate it again because इसका 50% भी कैसे आएगा obviously. One thing ना, हम इसका यहाँ पर ले लेते हैं. ठीक है, तो same will be written.
नाउ जितना इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से ही वी विल बी गोइंग इट अप. ओके, then assets are to be acquired in the month of February and April, and the payment would be 40,000 and 25,000. So here you will be writing down assets acquired in under the payment. February में 40,000, April 25,000. Next is an application has been made to the bank for granting of the loan 30,000, and it is hoped that it will be received in the month of May. So here leaving two lines because first we will be writing down the cash sales and receipt from the debtors, then bank loan. So bank loan in the month of May 30,000. So May में जाएंगे and we will write down over here 30,000. And dividend needs to be paid on 35,000 in the month of June. So dividend of 35,000 in the month of. Now debtors are allowed 1 month of credit. So cash receipt from debtors का information मिला भी. 1 month का credit. Okay. So next month में मिलेगा. This Jan का 36,000 will be received in the next month. Okay. February का 48,500 will be received in the month of March. So ऐसे करके लिखेंगे. तो जैन में कुछ भी अमाउंट नहीं आएगा. February में 36,000, 8,500, 43,000, 44,300, 51,250. नाउ कैश सेल्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था. इट मीन्स दैट कैश सेल्स कब रिसीव हुआ. कैश सेल्स इज रिसीव्ड इन द रेगुलर मंथ. जब हुआ तभी रिसीव्ड हो गया. तो ऑब्वियसली ना कैश सेल्स तो जब होगा तभी रिसीव हो जाएगा. The last month it was 54,350. We are done with the receipt side. Then we have to pay the sales commission of 2% on the cash sales. Okay, 2% का commission we have to pay on the cash sales. तो here मैंने one line मैंने यहाँ पर छोड़ दी थी. यहाँ पे लिखेंगे sales commission. $720. Same way we are going to calculate for every month. Cash sales का amount लोगे, will take the cash sales का amount into 2% you are going to do. अब क्या ये बताया है हमें कि आप कुछ क्रेडिट या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं बोला है. सो डायरेक्टली हम ये जो टोटल आया दैट वी आर गोइंग टू राइट डाउन ओवर हियर.
So now the expenses are there. So यहाँ पर लिखेंगे inside it cash commission on cash sales. जो यहाँ पर कैलकुलेट किया था सेम यू जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर. $970, $860, $886, $1025, $287. And 5% on the cash collected from the debtors. So इसके ऊपर sales commission at 5%. अगर पॉइंट में आ रहा है तो जस्ट राउंड इट ऑफ. देखो हमने जब कब कैश कलेक्ट किया था डेटर्स में 1 मंथ का क्रेडिट वी हैव गिवन. तो कमीशन भी हम जब लिखेंगे तब हम उसका 1 मंथ का क्रेडिट के हिसाब से लिखेंगे कमीशन. ओके. सो द कमीशन विच वी हैव टू पे टू आवर डेटर्स इट विल बी रिटर्न. जैसे क्यों? क्योंकि देखो ये भी तो हमने 1 मंथ ऑफ क्रेडिट ना. सी जैन का मंथ जब जैन का जो फिगर है दैट वी हैव रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी का फिगर वी हैव रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ मार्च. सो जब रिसीव हुआ तब हम उसको कमीशन देंगे. सो इसके लिए कमीशन भी उसी हिसाब से लिखोगे. Cash collected from debtors. Write down the amount 1800. 2215 and 2563. नेक्स्ट कम्स क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स को भी 1 मंथ ऑफ ग्रांट दी थी हमें मिली थी क्रेडिटर्स से. सो पेड टू क्रेडिटर्स 25,000. तो जैन का हम पे करेंगे कब? फेब्रुवरी में. सो इसके लिए फेब में लिखा. एंड 31,000, 25,500. From here only I am copying the figures. Then 30,600 and 37,000. नेक्स्ट सेल्स हो गया, मटेरियल हो गया, वेजेस. सो वेजेस वेजेस का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं. इट मीन्स दैट जैन का वेजेस इज पेड इन द मतलब रिस्पेक्टिव मंथ का वेजेस इज पेड इन दैट मंथ ओनली. सो 10,000
23,000. Next, we have a selling and distribution overheads. In 1 month ka credit, so Jan ka it will be paid in the month of Feb. So we have to start from the February month. 4,000. 5,500. 6,000. Same rule will be applied for the production cost and administrative cost. Now, starting from the month of Feb, 6,000. 6,300. 6,000. 6,500. And same way we have to do for the administrative cost. Jan ka jo hoga, that will be received in the month of Feb. So starting from the February month, 1,500. Then 1,700. 2,200. 2,000. हमें ये सारा बचेगा ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि जून मंथ का जो भी एक्सपेंस होगा दैट विल बी पेड इन द मंथ ऑफ जुलाई, बट वी आर ओनली ड्रॉइंग द कैश बजट फ्रॉम द जनवरी टू जून. तो इसके लिए हम सिर्फ जो ड्यूरेशन का है वो ड्यूरेशन का ही इंफॉर्मेशन लिखेंगे. Now you have to just take a total. 1,08,500. पेमेंट साइड पर 10,720. So how you will be getting the closing balance? This total minus this total. So C minus E. So total of receipts minus total of payments. 97,780. Write down over here total receipts. Over here write down total payments. Now see, January month का closing becomes next month के लिए opening. So closing for the first month becomes the opening for the next month. So 97,700. Take a total of the receipts. 1,82,280. Take the total of payments. 91,370. So 90,910 is the closing balance. So February month ka closing will become the opening for the month of March.
Take a total of receipts 1,82,410. Total of payments 57,885. 1,24,525. So March month ka closing will become the opening for the month of April. Take a total again of a receipt side 2,11,825. Total 92,036. 1,19,789. So closing balance of the month of April will become the opening for the month of May. Total 2,45,339. 71,240. The closing balance will be 1,70,099 rupees. So closing for the month of May will become the opening for the month of June. Lakh 79,699. Take a total of the payment side 1,17,650. Closing balance for the month of June will be 1,62,049 rupees. And we will close the working note as well. So with this, we are done with our sum. Now, same type of sum I'm going to give you for the practice. Okay. I'm just discussing with you all. The same format, everything will remain the same. I'm just discussing and you have to just tell me. Okay. I've just altered the figures. Rest everything is same. Okay. सिर्फ फिगर्स को अल्टर किया है, बाकी सब कुछ सेम है. So I'm just discussing the question with you all and you have to just give do this for the homework, and in the next class you are going to tell me the answer for this. Sony Limited, a newly started company, wishes to prepare cash budget from January. ठीक है. Sony Limited जो नई कंपनी है जो अपनी स्टार्ट हुई है, they want to prepare a cash budget from the month of Jan. Prepare a cash budget for the first 6 months from the following estimated revenues and expenses. They have given us the certain revenues and they have given us the certain expenses. From that you have to prepare a cash budget. Now देखो, cash sales means पैसा आने वाला है, so this will be written in the head of, under the head of receipts. Material, wages, production overheads and selling overheads, ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे expenses है, so this will be written under the head of payment. Material है मतलब we have taken it from the supplier. Now cash balance on 1st January
was 10,000. So very first month ka they have given us the opening balance of how much? 10,000 rupees. Cash sales are assumed to be 50% of the total sales. जो भी हमारे कैश सेल्स होंगे वो कितना होगा? 50% होगा टोटल सेल्स का. So if from this total sales 50% will be the cash, then remaining 50% will be the cash which will be received from the debtors. समझ में आया? सेम वे, सी सेम सम जो हमने अभी किया सेम वे ऐसे ही करना है इसका भी. A new machinery is to be installed at 20,000 on a credit. हम 20,000 की नई मशीनरी को इंस्टॉल करने वाले हैं. To be repaid by 2 equal installments in the month of March and April. हमने ये जो न्यू मशीनरी इंस्टॉल करवाई है ऑन अ क्रेडिट, इसका हमें इंस्टॉलमेंट मिला है. एक इंस्टॉलमेंट मार्च में पे करेंगे, एक अप्रैल में, एंड दैट ऑल्सो इक्वल. So 20,000 को if I divide equally, it will be 10,000, 10,000. So 10,000 will be paid in the month of April. 10,000 will be paid in the month of March. Next is cash commission at the rate 5% on the total sales is to be paid in the month following the actual sales. पूरा total, टोटल पर 5% ऑफ द कमीशन विल बी गिवन. जब भी हुआ है सेल्स तभी आपको उस हिसाब से पे करना है. फाइन. तो यहाँ पर तो फिलहाल हमें कुछ बताया नहीं है, सो फिलहाल कुछ भी नहीं करेंगे. अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो ठीक है, अदरवाइज जो मंथ में सेल्स हुआ है वही मंथ में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर. रुपीज 10,000 बिन द अमाउंट ऑफ सेकेंड कॉल मे बी रिसीव्ड इन March. Share premium amounting to rupees 2,000 is to be obtainable with the second call. हमें ये receive होने वाला है. So if we are going to receive it, this will be written under the head receipt. So amount of the, what you will do, you will add this two amounts, 10,000 plus 2,000, क्योंकि आपको कॉल का अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में कॉल के साथ यू आर गोइंग टू गेट डाउन द अमाउंट ऑफ अ प्रीमियम एज वेल. सो यू विल हैव टू ऐड बोथ द थिंग्स एंड यू विल हैव टू राइट डाउन. सो टोटल 12,000 विल बी रिटर्न इन द मंथ ऑफ मार्च. Now next one. Period of the credit allowed by the suppliers is 2 months. 2 months का क्रेडिट हमें मिला हुआ है. So इसका मतलब है कि हमें जो जैन का पेमेंट करना है, we are going to give in the month of which? In the month of March. February का पेमेंट करेंगे in the month of April. तो what you are going to do? You are going to start writing it down from the month of March. मार्च में 20,000 लिखोगे, अप्रैल में 22,000, सॉरी ईयर 20,000, अप्रैल में मार्च में 20, अप्रैल में 14, देन मई में भी 14,000, जून मंथ में 22,000. नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ द क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर्स. हमने कस्टमर्स को 1 मंथ का क्रेडिट दिया है, ठीक है. सो वी विल बी रिसीविंग दिस अमाउंट इन द 1 मंथ. सो ऑब्वियसली अब समझ में आया, जो कमीशन भी होगा वो भी 1 मंथ के बाद ही उसको पे करेंगे. सो कमीशन यू विल स्टार्ट पेइंग फ्रॉम द जैन का कमीशन आपको मिलेगा फरवरी में, फरवरी का मार्च में, लाइक दिस यू हैव टू डू इट. एंड कस्टमर का जो 50% वाज ऑन अ क्रेडिट सेल, उसका भी मतलब जैन का अमाउंट वी विल रिसीव इन द फेब का अमाउंट वी विल रिसीव इन द मंथ. सो यू विल स्टार्ट राइटिंग इट डाउन फ्रॉम द फरवरी कॉलम. डिले इन द पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स इज 1 मंथ. 1 मंथ का पेमेंट के डिले है. सो जैन का वी विल बी रिसीविंग इन द मंथ ऑफ फरवरी. So you will start writing it down from the month of February. Like this we have done in the previous sum. जैसे हमने previous sum में overheads का किया है, same pattern you are going to follow over here. Now there is no information regarding the wages which has been given. नहीं है. Delay in the payment of the wages is half month. Half month में मतलब 15 days में you are receiving the amount. So now how to do for this? So जो 4,000 है, सो 4,000 करंट मंथ में तो मिल जाएगा, मतलब जैन में तो कितना मिलेगा 2,000, और ये जो नेक्स्ट 2,000 है दैट यू विल रिसीव इन द मंथ ऑफ फरवरी. सेम वे 4,400 है तो 2,200 यू विल रिसीव इन द मंथ ऑफ फेब एंड 2,200 यू विल रिसीव इन द मंथ ऑफ मार्च. तो ऐसे यू विल हैव टू स्प्लिट इट अप.
ऐसे स्प्लिट करोगे उसको वेजेस को, then you will have to do the total and then you will have to write it down. 4,600, so 4,300 in the month of March, 4,300 in the month of April, and so on. You have to do it like this for the wages. समझ में आ रहा है? Either you can do this as a working note or directly भी आप यहाँ पर करके total भी लिख सकते हो. Both the ways are correct. 1,000 for this month, 2,000 over here.